In my previous video, I have posed this question whether there is a relationship between fat and cholesterol, saturated fat. If you take does intake of saturated fat increases your cholesterol level? And the answer was simply no, because that doesn't impact. Actually, fat is not the culprit, increasing your cholesterol level. Then came the role of drugs. 1980 में statins आने शुरू हुए and we are being taking people are on statins on regular basis, on lifelong basis, one can say that. And in spite of that, people are still taking it and ये cholesterol नीचे आता है, ऊपर जाता है, आता है, ऊपर जाता है, and this cycle goes on. So now the question is, we have been lowering, but the question is, why this cholesterol goes up? Nobody seems to have this thing in mind कि ये ऊपर ही क्यों हो रहा है? See, this is the question we should ask ourselves. Now, the body produces excess cholesterol when the need arises. Because I have told you earlier कि it is 80-20 ratio, कि 80% तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही बनेगा, and जब भी कोई नीड अराइज होती है कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है. And the fact is why it increases is because of the inflammation, right? Inflammation in the sense कि आपको कहीं बॉडी पेन हो रहा है या कोई नेक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, एंड कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड टू हील योर बॉडी. आपकी हीलिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए ही चाहिए. एंड अब आप सोचो द सेकेंड पार्ट, ये बॉडी पेन हो क्यों रहा है? वाई देयर इज इन्फ्लेमेशन? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन कि वाई देयर इज प्रॉब्लम. एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम्स है. हेडेक क्यों हो रहा है? वाई देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन स्लीपिंग पैटर्न? ऑल दैट, दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड. द थिंग इज, this is because of the emotional stress. बात घूम फिर के emotional, it is not stress, I'm telling you. Stress is something which can be dealt with. It is because of a emotional stress. And emotional stress में क्या होता है? This emotional stress means what? Emotional stress means there's stress in relationship. आपके there is no warmth in the relationship actually. कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है which is like disturbing you. Then there's a work problem है, कहीं पर work में problem है because you're not liking your job, or there's layoff from the job. So that again is an emotional crux actually. Then loss of loved ones. Actually, pandemic mein what we have seen is loss of loved ones to a great extent, and this is really very disheartening. So it is not what you eat kills you, but what eats you kills you. So इसको मैनेज करने के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, and this is steady by Dimsdale J.E. with the title Variability of Plasma Lipid in Response to Emotional Arousal. उन्होंने इस आर्टिकल में बताया कि 10 to 50% इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल में आ ही जाता है whenever you are going through the emotional stress phase. Now, and this is really very one should understand all these things. And now I'll tell you what is the science behind it. What is the science behind it? See, whenever there is stress, हमारा जो autonomic nervous system है, that comes for a rescue. और उसमें क्या होता है? Rescue in the sense कि उस time we need more energy. And उसके लिए what happens, हमारा heart rate बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा glucose level बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा बीपी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड हमारे मसल्स को बहुत काम करना पड़ता है, एंड इसीलिए मस्कुलर पेन्स होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है.
तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को. सो व्हाट हैपेंस इज, नाउ ये तो एक्यूट स्ट्रेस में डील कर लिया हमारे नर्वस सिस्टम ने, बट व्हाट अबाउट क्रॉनिक स्ट्रेस? दिस वाज, हमारी बॉडी नहीं बनी थी टू डील विद द क्रॉनिक स्ट्रेस. एक्यूट स्ट्रेस के लिए ओके, कोई आपको एक्यूट कोई प्रॉब्लम आई, आपने फेस किया, आपका नर्वस सिस्टम ने उसी टाइम उसको डील करके आपका ख़त्म कर दिया. बट क्रॉनिक स्ट्रेस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन कंटिन्यूस बेसिस. So this is the reason we experience muscular pain. What is required? Now the question is what is required, and we know, or everybody knows what is required, but how many of us go very how many of us go very you mean to say कितना काम हम कर पाते हैं अपने ऊपर? क्या करना है, हमें रिलैक्सेशन मोड में आना है. We have to come in the relax mode, because क्या होता है कि यहाँ पर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ता है, तो रिलैक्स मोड में हमारा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक मोड में हमें आना होगा, वेयर देयर इज रिलैक्सेशन. एंड रिलैक्सेशन अगर हम बात करते हैं तो वी नीड, कैसे रिलैक्स होगा, वी नीड टू चेक आवर रिप्रेस्ड इमोशन. जो भी हमारे रिप्रेस्ड जो इमोशंस दबे हुए हैं, मे बी चाइल्डहुड के इमोशंस हैं, कुछ हमारे चाइल्डहुड में हुआ होगा जो कि आज की डेट तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं. कुछ एडल्टहुड के इमोशंस होंगे वेयर वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट. अगर एक्सप्रेस करते हैं तो गड़बड़ होती है, सप्रेस करते हैं तो गड़बड़ होती है. तो करें क्या? तो थिंग इज वी नीड टू ट्रांसफॉर्म इट. डोंट एक्सप्रेस इट, डोंट सप्रेस इट, बिकॉज बोथ आर लाइक you will be in a very difficult situation. So transform it. Now transform means what? And the best medicine I can say of this is, अगर आपको repressed emotion ख़त्म करने हैं, just forgive it. Just forgive it. अब प्रॉब्लम ये होती है कि it's very simple to say to forgive it. But अगर हमने समझ लिया, if we understand the concept of forgiveness, it's like we are benefiting it. We are not forgiving, हम अपने तरफ से forgive करते हैं with a simple reason कि this is affecting our health. The moment you get this picture, the holistic view कि हमें forgive क्यों करना है, it's because we have to benefit ourselves, right? दूसरे को benefit तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको सबसे पहले benefit मिलेगा, and you will be releasing the repressed energy, जो आपकी जो energy block हो गई है, that will be released. So relaxation comes with the forgiveness. आपको peace of mind मिलना शुरू हो जाएगा. Then there was a doctor called Dr. Ornish, again an American, and he said that अगर आपको ये करना है, because heart सबसे ज़्यादा affect होता है chronic stress में, he said कि just meditate. See, Western people are saying all these things कि just meditate, because it will be your heart which is being affected, वो उसको थोड़ा सा relief मिलता है when you meditate. Then third, I would say there's a Japanese paradox, जहाँ उनका जो life culture है, that is important, and this study was done by Dr. Mermott. What he said in this study is, जो उन्होंने जापानीज कल्चर में देखा, उन्होंने कहा फूड इज़ नॉट द कल्प्रिट, फूड से कोई परेशानी नहीं है. दिस सेड जो उनका कल्चर है ऑफ टुगेदरनेस, ऑफ सोशल स्टेबिलिटी, एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है, एंड दिस समहाउ वी आर मिसिंग. अमेरिकन कल्चर में क्या हो रहा है, पीपल आर not living together but they are living individually. वहाँ individualism आना शुरू हो गया, and with the result there is loneliness, there is depression. तो अगर हम ये तीनों चीज़ें करना चालू करते हैं, like first I've told you just forgive it, it's for your benefit. Second, meditate because it's for your heart. And third, social stability के लिए try to live together. एकजुटता होनी ज़रूरी है. आज की डेट में क्या है, कंपटीशन में एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं. वी आर नॉट कोऑपरेटिंग बट कम्पीटिंग विद ईच अदर. सो अगर हम इसको होलिस्टिकली, नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर हमको
आपको समझ में आ जाता है कि why cholesterol is rising, why it is on the move, on the rising mode, अगर हमने ये समझ लिया, I don't think so कि we need something else to define why our cholesterol goes up. We have understood the concept, and it is really a food for thought for each of us to think about it. Manage your emotional stress. This will really hurt you, and keep smiling.